I'm going to start with some basic concepts. This is your whiteboard, by the way, where will be working. Before we understand everything related to motion in a straight line, we need to understand about Cartesian coordinate system. In the Cartesian coordinate system, actually it's a three-dimensional space. If we look at it that way, it's 3D XYZ axis. So if I draw this thing, let's say like this, and I'm talking about position vector first, position. I'm talking about the position of a particular object, let's say. So let's say Vidisha is somewhere. So this is Vidisha's position. I want to know the coordinates of Vidisha. So how will I know? इधर जो है x axis पे 1, 2, 3 and 4. Z axis पे 1, 2, 3 and 4. And y axis पे 1, 2. So what are the coordinates of Vidisha? Can you tell me, Vidisha? 4 to 4. सही है. तो ये आपका पोजीशन हो गया. 3D स्पेस में है. 1D स्पेस में लोगे जो कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में 1 डायमेंशनल होता है, तो आप सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ही बनाओगे और कुछ नहीं. It's just the x-axis. There is an origin. There's 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5. Whatever units you want to choose, it's up to you. तो अभी आप इधर हो तो यहाँ पे पोजीशन आपकी होगी x = 2. ये आपकी पोजीशन है. यूनिट आप कुछ भी ले सकते हैं, मीटर, किलोमीटर, whatever you like. अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट होता, हाँ बताओ. Shortest distance between the initial point and the final. सही है. तो अगर इधर ही मैं विदिशा को पहले V1 फिर V2 और फाइनली V3 पे ले जाऊं, तो V1 से V2 से V3 ले जाने में डिस्प्लेसमेंट कितनी होएगी और डिस्टेंस कितनी कवर होएगी, ये बताना आपको. Distance will be 8 units. No, 6 units. Hold on. 1, 2. Take your time, my friend. Distance will be 6 units and displacement will be 2 units. So distance is 6 units and displacement is 2 units. ठीक है, तो ये तो आपको समझ आ गया. ग्राफ देखते हैं. ग्राफ तो I'm going to draw some graphs here. सबसे पहले I'm going to draw a position time graph for you. So how it's gonna go is, on the y-axis I'm having position x, on the x-axis I'm having time t, arbitrary units, और अलग अलग तरह के ग्राफ बनाऊंगा. आपको बताना भाई ये क्या है, कैसा, ये क्या बिहेव कर रहा है. तो आप ये बताओ सबसे पहले, ये किस चीज का ग्राफ है? इस बॉडी के मोशन के बारे में क्या? Time graph, right? Yeah, this is a position time graph. The body is at rest. Body is at rest. Anything else you can say? Nothing else? No more information you can provide me?
Now, I'll help you with that. So one thing you can say is that position is positive. Body is not at origin or net negative. Position is positive. So it is to the right of the origin that your body is right now. And then after that, we can take few more examples. For example, I could draw a graph like this. You have to tell me about both the blue graph and the red graph. Both. What is the distinction and what are the common things about the blue graph and the red graph? And then finally, the green graph. So RGB. By the way, RGB are the three colors that are used in mobile and TV displays. Red, green, and blue. All the colors in the mobile and TV are formed by three LED light emitting diodes, bulbs, small LED bulbs called pixels. And they basically fuse together to form all the colors of the screen that you're watching right now. We'll study that in semiconductor electronics, class 12, last chapter, second last chapter. Just a fun fact. So now you can tell me about the RGB graphs, red, green, and blue. Red and blue both show uniform motion. Yeah, uniform motion is a good way to say कि ये कर क्या रहे हैं. सही है. तो any distinction or any common things, ठीक है, मैं लिख देता हूँ. R and B actually G भी कर रहा है uniform तो. R, G, B, all three are doing uniform motion. Uniform motion मतलब constant velocity. Constant velocity मतलब straight line motion with constant speed. That is no change in direction also not allowed. So ये तो हो गया पहला पॉइंट. आपने पूरा नहीं बताया. अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा जी भी वही कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन. ग्रीन वाला भी. G is a So little slower than both yeah, how can you say that? Very good. How can you because conclude that? the position G's final position is lower than R and B. Yeah, that's one way of saying the same thing. जैसे अगर मैं कोई टाइम लेता हूँ, मान लो ये वाला एक कॉमन टाइम लिया मैंने, इसमें देखो सबसे ज्यादा पोजीशन किसकी है? आर की है. फिर आर और बी में कौन फास्टर है? I don't know, it's confusing. It's confusing. I'm just kidding. So what I'm saying is that ये तीन है, ठीक है. इसमें से सबसे नीचे ग्रीन रह जाएगा किसी पर्टिकुलर टाइम टी नॉट के लिए. तो क्या ये कहना सही रहेगा कि रेड इज फास्टर देन ब्लू विच इज फास्टर देन ग्रीन, और देयर इज सम अदर catch here? Catch. How do you decide the speed qualitatively? How you can analyze? हाँ, लेकिन ग्राफ की स्लोप होती है ना. पता है क्या? पता है ना. नोट speed, the slope of the xt curve, position time या distance time, gives us the speed.
So in this case, R and V have the same speeds because they are parallel. They have the same slope. स्लोप मतलब क्या होता है? स्लोप होता है tan थीटा. पता है आपको स्लोप क्या होता है? ये मेरा एक्स वाई एक्सिस है, मान लो ये मेरी एक लाइन है. अगर ये एंगल थीटा है, देन स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा. ठीक है, तो जितना बड़ा थीटा होगा उतना ज्यादा स्लोप. तो आर एंड बी पैरेलल हैं, तो आर एंड बी हैव सेम स्पीड, which is greater than speed of g. Lastly, I can also say that b originates from the origin. मतलब वैसे बोलने की चीज नहीं है, बट बोल भी सकते हैं अगर पॉइंट ही बनाने हैं तो एक पॉइंट ये बन गया. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. समझ आ गया ना? सही है. मेरा फोन बार बार, जस्ट अ सेकंड, मैं इसमें हेडफोन प्लग कर देता हूँ. नो, दैट्स नॉट गोना वर्क. I'll put it on silent. That will shut it up. Yeah, next set of graphs. Tell me about this one. What do you conclude about RGB? In the G1, displacement will be negative. Your voice just cracked. Can you repeat yourself? In the G1, the displacement would be negative. That's correct. For any particular time interval, the displacement is always going to be negative. Because, one second, I'm getting a call from the Wi-Fi guy. Having Wi-Fi installation in my new place. Just a second. Hello? Yeah. So we were talking about these graphs. You said that displacement would be negative for green. So that's correct. What else can we say? For red, maybe it took a U-turn. At, That's true. Red and went then, up. yeah. And then it came down, and then it Again took a U-turn. went, yeah. In the B1, it started from the negative position. Yeah, it started from a negative The- position. So I can say that B is constantly accelerating. That's what I wanted to hear from you, which you didn't say. B is constantly accelerating, whereas G is constantly decelerating. That is, it is reducing its speed constantly. And R is both accelerating and decelerating, depending on the time. Also, R comes to rest. Very good. On two instances. What are the two instances? जहाँ भी slope 0 हो रहा है,
उन्हीं की बात चल रही है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट रेस्ट स्टेट है आर के लिए। यहाँ पे इसकी स्लोप क्या हो गई, 0, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस 0। तो यहाँ पे वेलोसिटी होगी 0। यहाँ पे अब देखो एक्सेलरेशन डिसेलरेशन का चक्कर क्या होता है। क्या है ये, एक मिनट, व्हाट काइंड ऑफ अ सॉर्सरी इज दिस। अब see, देखो एक्सेलरेटिंग ग्राफ जो होता है ना, उसमें आपकी स्लोप बढ़ती रहती है, स्लोप कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। इसलिए अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला टाइप होता है। कनकेव अपवर्ड्स बोलते हैं इसको, कॉनकेव अपवर्ड्स। ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे 12th क्लास में कॉनकेव मिरर, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। This is an accelerating graph for you. It can start from negative also. It's not a problem. So you can see the graph B is very similar to what we see here. Whereas a decelerating graph is like this. Here the velocity is positive, but still it is the slope keeps on decreasing, which means speed keeps on decreasing. It is tending to 0 in the end. This is a decelerating graph. Is this a decelerating graph? 101%. You have any doubt about that? You Why? said it ends. You said it ends at 0. I said that the speed is tending to 0. Like here, the speed is very close to 0, isn't it? The slope is almost 0 here. So I'm not saying it is going to 0. I'm just saying it is a decelerating graph. It's the slope that we have to keep in mind. I can show you some instances. For example, right in the beginning, this was the slope. And then towards the end, the slope is like this. So do you think the final slope is greater or not? अब इधर देखो शुरू में ऐसे है, बाद में ऐसे है, तो फाइनल स्लोप इज स्मॉलर। तो ये सब डिसेलरेटिंग ग्राफ्स हैं, स्लोप कीप्स डिक्रीजिंग। decelerating graph and accelerating graph. Downward opening curve. Concave downwards. ठीक है, तो ये है। और इसमें अगर ध्यान देंगे तो ये रेड वाला तो कुछ भी कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो एक्सेलरेट डिसेलरेट। जी बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। जी इज कॉन्स्टेंटली डिसेलरेटिंग इन द सेंस दैट नेगेटिव होती जा रही है वेलोसिटी, और भी ज्यादा नेगेटिव। बट इधर नोटवर्दी बात ये है, बहुत ज्यादा नोट करने की चीज है ये इधर, कि स्पीड ऑफ जी, आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, इंक्रीजेस स्लैश डिक्रीजेस विद टाइम। जी की स्पीड बढ़ रही है कि घट रही है टाइम के साथ? रॉन्ग आंसर। स्पीड बढ़ रही है,
स्टीप होता जा रहा है ना, ग्राफ जो है वो ज्यादा स्टीप होता जा रहा है। इवन दो डिसलरेशन का मतलब क्या होता है, डिसलरेशन का मतलब स्पीड कम होना भी बोल सकते हैं, बट अगर टेक्निकल होना है तो नेगेटिव स्पीड बढ़ना या नेगेटिव वेलोसिटी का बढ़ना भी डिसलरेशन ही कहलाता है।